So dear students, welcome back to the lecture. So हम discuss कर रहे थे about the Raman spectroscopy, or we can say vibrational Raman spectrum. Now आज के lecture में हम discuss करेंगे about the rotational fine structure. Now जब हम rotational fine structure की बात करते हैं of Raman spectra, तो हमें इसको पूरे डिटेल्स में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट इजी, आई कैन से, टू रिजॉल्व. इट इज नॉट इजी टू रिजॉल्व द फाइन स्ट्रक्चर, और आई कैन से फाइन स्ट्रक्चर ऑफ any molecule except diatomic molecule. तो हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स के फाइन स्ट्रक्चर को रिजॉल्व करना इतना इजी नहीं है. सो व्हाट वी मीन बाय हियर फाइन स्ट्रक्चर. नाउ अभी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने क्लोरोफॉर्म का रमन स्पेक्ट्रा देखा जिसमें हमें ऐसे पीक्स मिल रहे थे. ठीक है, ऐसे कुछ पीक्स हमें मिल रहा था. तो फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर इस स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल इस पीक को मैं एलैबोरेट करता हूं, इफ आई मैग्नीफाई दिस पीक, तो क्या इस पीक के अंदर मुझे बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स यहाँ पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दिस इज व्हाट वी मीन बाय फाइन स्ट्रक्चर. एंड व्हाई वी गेट फाइन स्ट्रक्चर. हमें फाइन स्ट्रक्चर क्यों मिलता है? फाइन स्ट्रक्चर क्यों मिलेंगे? द फाइन स्ट्रक्चर arises due to the presence of sub energy levels. Sub energy levels. तो सब एनर्जी लेवल्स क्यों मिलेंगे? बिकॉज वी नो दैट within a vibrational level we have a number of rotational energy levels, and within an electronic energy levels we have a number of vibrational and rotational energy levels. So due to the presence of sub energy levels we can get this kind of fine structure. Now we will restrict our discussion to a diatomic type molecule. So because for other molecules, it will not be easy to resolve with a fine structure. And again, we can also know this as vibrational. इसको हम vibrational, rotational Raman spectroscopy भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सारे रोटेशनल वाइब्रेशनल लाइंस को हम कंबाइन करके ही हमें क्या मिलेंगे? रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे. So again we will write the energy expression. We can write the energy expression as that mu bar Vj, that is the energy expression for the combining vibrational and rotational level, and this is equal to, again we have derived this equation while we were discussing the vibrational rotational spectrum of a molecule, and this is equal to mu bar mu j. Mu is for vibration and j is for rotation. It is equal to omega e bar mu plus 1 by 2 minus omega e bar xe mu plus 1 by 2 square plus bj j plus 1 सेंटीमीटर इनवर्स. तो ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन हमने डिस्कस किया है व्हेन वी आर डिस्कसिंग, जब हम डिस्कस करते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम. सो नाउ let's solve the selection rules, and we know that for diatomic molecule, हमारे पास diatomic molecule के लिए हमारे पास रोटेशनल जो सिलेक्शन रूल है, the rotational selection rule is, हमारे पास जो selection rule है, that is delta j is equal to 0 or it can be plus minus 2. So this is the selection rule, जो कि पहले हमने already देख के आया है. selection rules rotational diatomic molecules के लिए कैसे बनता है. So now
if we combine the rotational selection rules with the transaction, अगर इस rotational rule को इस follow करते हुए अगर हम transaction करें तो क्या होगा? So if we, I can say, combine the selection rule, that is the rotational selection rule, with the transaction, जो हमारा transactions होंगे, transaction, particularly the fundamental transaction. यहाँ पे हम fundamental transaction को ही लेंगे, that is mu is equal to 0 to v is equal to, that is equal to v is equal to 0 to v is equal to, और I can write v is equal to 0 to v is equal to 1. तो हम यहाँ पे सिर्फ fundamental transactions को ही लेंगे, because we know that in case of Raman spectrum, the other weak transaction, that is our overtones or hot bands, are too weak, and usually we will not consider that type of transactions here. तो हमारा जो focus रहेगा वो सिर्फ fundamental transaction को ही रहेंगे, और fundamental transaction is mu is equal to 0 to mu is equal to 1. Now, if we apply this selection rule to this fundamental transaction, we have some Q branches. हमारे पास कुछ Q branches मिलेंगे, और Q branches कब मिलेंगे? When we apply the selection rule, that is delta J is equal to 0. अब delta J is equal to 0 वाला selection rules अगर हम transactions को apply करेंगे, हमें क्या मिलेंगे? Q branches मिलेंगे. तो ये आपको याद रखना है, the Q branches arise when delta J is equal to 0, and the energy, that is delta EQ, will be equal to omega E bar 1 minus 2xe centimeter inverse. ये already equation हमारे पास आया हुआ है और equation हमारे पास निकाला. ठीक है. When we apply delta J is equal to +2, we will get S branches. जब आप delta J +2 के बराबर पुट अप करेंगे तो आपको S branches मिलेंगे, and the energy delta ES will be equal to omega E bar 1 minus 2xe plus B into 4J plus 6. इसके बराबर आपको मिलेंगे सेंटीमीटर इनवर्स the energy of S branches. Again, when you put delta J is equal to -2, because the selection rule is delta J 0 भी आ सकता है, plus -2 आ सकता है. Then when you consider J is equal to -2, you will get O branches. आपको क्या मिलेंगे? O branches मिलेंगे, and the energy of your O branches will be equal to mu E bar, और I can say इसको आप ओमेगा E bar भी लिख सकते हैं, जो कि आगे हमने लिखा था 1 minus 2xe minus B 4J plus 6. तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. So these are the energy of the Q branches, S branches and O branches. Q ब्रांच कब मिलेंगे? जब आप J का वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे. S ब्रांचेस आपको तभी मिलेंगे जब आपका J ब्रांचेस आपके क्या मिलेंगे? +2 मिलेंगे, एंड O ब्रांचेस तब मिलेंगे जब आप J के वैल्यू को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे -2. सो एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब आप S branches, that is the J is equal to +2 कंसीडर करेंगे, the J वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 onwards. However, in case of O branches, the value of J starts from 2, 3, 4 and so onwards. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. Now, ये आपका एनर्जी इक्वेशन आ गया, Q branches, S branches and O branches. Now, हमें क्या करना होगा? स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक लाइंस हमें निकालना है. Thus, the stocks line कहां पे लाई करेंगे? एक्साइटिंग रेडिएशन के लेफ्ट साइड में, दैट्स टुवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसी, एंड एंटी स्टॉक लाइन राइट साइड पे हमें मिलेंगे. लेकिन यूजुअली हम एंटी स्टॉक लाइंस को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि उनका इंटेंसिटी वो बहुत वीक होते हैं, तो हम सिर्फ स्टॉक लाइंस को ही कंसीडर करेंगे. Thus, the stock lines lying at the lower frequency
frequency of the exciting radiation will occur at a wave number given by, अब हमें स्टोक्स लेंथ कैसे निकालना होगा? स्टोक्स लेंथ हमें पता है कि ये हमें एक्साइटिंग रेडिएशन के लोअर सेट पे मिलेंगे. सो वी हैव टू ऐड द एक्साइटिंग रेडिएशन इन दिस इक्वेशन. सो फॉर द Q branches, that is Q branches किसके बराबर होंगे? म्यू बार Q इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. हमें क्या करना होगा? म्यू एक्साइटेशन माइनस डेल्टा EQ को हमें यहाँ पे लिखना होगा. दैट इज इक्वल टू म्यू बार EX माइनस, ये हमारे पास क्या था? इसको मैं लिखूंगा या ओमेगा E बार लिख सकता हूँ, या यहाँ पे मैंने म्यू E बार लिखा है 1 माइनस 2xe सेंटीमीटर इनवर्स. तो यहाँ से मेरा स्टोक्स लाइंस मिलेंगे Q ब्रांचेस के लिए. S ब्रांचेस के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ? द S ब्रांचेस, दैट इज mu bar S is equal to mu bar excitation minus delta ES. That is equal to mu bar EX minus the the energy of the S branches is mu bar E 1 minus 2xe plus B 4j plus 6, that is centimeter inverse. Similarly, I can write for the O branches. O branches is equal to mu bar O is equal to mu bar excitation minus delta EO. तो इन सब को हमें exciting radiation की lines के respect में लिखना होगा, which is equal to mu bar EX, that is minus, तो mu E bar 1 minus 2xe, that is this equation, minus B 4j plus 6. तो इनको हमें सबको क्या करना होगा? ब्रैकेट में रखना होगा ताकि ये माइनस सबके लिए अप्लाई हो सके सेंटीमीटर इनवर्स. So these are the Stokes line for your Q branches, S branches and O branches. Q branches and S branches and O branches. तो यही सारा आपकी रमन स्पेक्ट्रा में आपको देखने को मिलेंगे. और and here mu bar EX is the, क्या है ये? Frequency of incident radiation, or we can say exciting radiation. जो रेडिएशन आप यूज करेंगे उसमें से हमें क्या करना होगा? एनर्जी Q ब्रांचेस, S ब्रांचेस, O ब्रांचेस को माइनस करना होता है ताकि हम इसको क्या करें? एक्साइटिंग रेडिएशन के लोअर साइड में हम इसको दिखा सके. क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि दिस ऑल आर आवर, ये कौन सा है? स्टोक्स लाइंस है. स्टोक्स लाइंस है बिकॉज ऑलरेडी वी से एंटी स्टोक लाइंस का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत कम होते हैं. तो हम उसको क्या वहां पे हम नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ कंसीडर करेंगे सिर्फ एंटी स्टोक लाइंस को ही. वी विल नॉट कंसीडर द एंटी स्टोक. नाउ वी विल सी ए स्पेक्ट्रम. नाउ हम एक स्पेक्ट्रम को देखेंगे और वहां से हम देखेंगे कि कैसे आपका Q branches, O branches, S branches यहाँ पे arise होते हैं. Now let's see a spectrum in which you will see both the rotational lines, that is the pure rotational lines, and your Q branches, S branches and O branches, and we will see what kind of information we can get from your Q branches, S branches and your O branches. Okay, so here I have a spectrum. For a I can say diatomic molecule. So this spectrum is for a diatomic मॉलिक्यूल. ये जो स्पेक्ट्रम है वो आपकी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है. एंड दिस स्पेक्ट्रम आई हैव टेकन इट फ्रॉम द Bennuel book. Now in this spectrum what we are seeing is that here this is your pure rotational. These are all pure rotational lines.
ठीक है. On the right side, that is this side, we have the pure rotational lines of a diatomic molecule, and on the left side, that is this one. These are the our, I can say, on the left side, the we have the O branches, we have the S branches, and we have the Q branches. Now, this the more intense line is our I can say Q branches, and this is our O branches, and this is our S branches, mu S, mu O, and mu bar Q. So this is our S branches. So in the spectrum, we what we are seeing is हमें क्या मिल रहा है? The pure branches, pure rotational branches on the left side, right side, and what we have here is the Q branches, O branches, and S branches. Now, the Q branches, O branches, and S branches are shifted from the exciting radiation. So this is our exciting radiation. The bigger one is exciting radiation, that is mu bar EX. Now these three branches, that is Q branches, O branches, and S branches, are shifted from the exciting radiation. अगर इसकी कितना ये shift हुआ है, that shift is equal to mu bar 1 minus 2xe. So I can say these three branches, there is Q branches, S branches, and O branches, are shifted from our exciting radiation by a frequency which is equal to mu bar E 1 minus 2xe. तो इतना ये आपकी exciting radiation से shift हुआ है. And the presence of these strong Q branches in the Raman spectrum is to be noted, and then these branches we have to compare with the P and R branches only, which occurs for a diatomic molecule in case of IR spectrum. So again, मैं repeat कर रहा हूं कि the presence of the Q branches in the Raman spectrum, आपके Raman spectrum में जो Q branches आएंगे, इसको हमें compare करना होगा with the P and R branches only, जो कि आपकी एक diatomic molecule में IR spectrum में मिलेंगे. So when you analyze the O and R branches in the Raman spectrum, you can get important informations. Yeah, I can say you can provide, yeah, you can get the value of your rotational constant. तो यहाँ से आपको rotational constant का value मिलेंगे, that is our rotational constant is B. So जब आप Q ब्रांचेस जो कि आपको रमन स्पेक्ट्रम में मिलेंगे, इसको आप कंपेयर करेंगे IR स्पेक्ट्रम के साथ, जिसमें आपका P और R ब्रांचेस मिलेंगे. जब आप इनको एनालाइज करेंगे, when you analyze the, let me write here, so I can write the analysis of the O and R branches in the spectrum, or I can say in the Raman spectrum, we can get the value of rotational constant B. ठीक है? जब आप O and R ब्रांचेस को रमन स्पेक्ट्रम में एनालाइज करेंगे, वहां से आपको रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वहां से आपको मिलेंगे. तो जब आपका रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको मिलेंगे, we know that B is equal to H upon 8 pi square IC. When you get the value of this B, and we know that H, 8, this pi and C is constant, from this equation I can get the value of moment of inertia, that is I. So इस इक्वेशन से जब आप स्पेक्ट्रम से आप B का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, सो यहां से आप I का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो I will be equal to H upon 8 pi square
बी सी। तो यहाँ पे ये एच भी आपको पता है, 8 भी पता है, पाई भी पता है, बी आपको स्पेक्ट्रम से मिल जाएंगे, सी का वैल्यू आपको पता है। तो फ्रॉम दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड नाउ जब आपको I का वैल्यू पता चल जाएगा, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू आर इक्विलिब्रियम स्क्वायर। सो from here you can calculate the value of this r square, क्योंकि अब आप ri का वैल्यू फॉर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको पता चल चुका है, तो यहां से आप r square का वैल्यू निकाल सकते हैं। r इक्विलिब्रियम दैट इज, तो r इक्विलिब्रियम किसके बराबर होंगे, सो r स्क्वायर इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और r इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन म्यू। सो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द R equilibrium means equilibrium bond length of that particular molecule. So हम क्यों रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर से हमें ओ ब्रांचेस के बारे में पता चल रहा है, क्यू ब्रांचेस के बारे में पता चल रहा है, एस ब्रांचेस के बारे में पता चल रहा है। व्हेन वी एनालाइज द क्यू एंड आर ब्रांचेस फ्रॉम द रमन स्पेक्ट्रम, हम उस स्पेक्ट्रम से उस पार्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या पता कर सकता है, रोटेशनल कांस्टेंट पता कर सकते हैं। जब हमें रोटेशनल कांस्टेंट बी का वैल्यू पता चल जाएगा, हम उससे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। एंड व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से हम उस पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। सो एक अननोन डायटोमिक मॉलिक्यूल से हम उसकी पूरी डिटेल्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी स्टडी द fine structure or rotational Raman vibrational spectroscopy. Now, this is only applicable to the diatomic molecule. For larger molecule, we can ignore because it is not possible to resolve the fine structure of larger molecule. So our study will be only restricted to a diatomic molecule. So that's all about your rotational fine structure. Thank you very much.